Hi guys, good evening everyone. Welcome back to Finance Current Affairs RBI 247. Today I shall be starting with SEBI annual report. This is not just relevant for the RBI aspirants but also for SEBI aspirants. दोनों के लिए ही ये काफ़ी relevant है. One second. Okay. डाउट्स वगैरह हम लोग क्लास के बाद ले लेंगे. एक बार क्लास कवर कर लेते हैं अच्छे से. नाउ एनुअल रिपोर्ट टोटल 24 पेजेस के आसपास की है. आपने बहुत सारी इधर उधर वीडियोस देखी होंगी सेबी की एनुअल रिपोर्ट की. दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट. आई वुड रिक्वेस्ट टू टेक इट लाइक दैट. ये डॉक्यूमेंट कोर्स में पोर्टल में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है एंड इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले एक ढांचा समझ लेते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड briefly how an annual report should be covered and how it will be covered by me in this session. और वो बेसिक स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग will dive deeper into the annual report. ठीक है. Lot of students were asking about the test series. So now the test series has been launched. You can go to the website for RBI test series. Phase 1 की test series launch हो गई है. एक बार चेक कर सकते हो. उसमें there are a total of 10 tests for Phase 1 Quant Reasoning English General Awareness that you will be provided. वो टेस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन. व्हाट हेल्प्स यू द मोस्ट इज रिवर्स लर्निंग. जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. फॉर दैट दिस बुक इज ऑल्सो देयर ऑन Amazon राइट नाउ. यू कैन वेरी मच बाय दिस बुक एंड स्टार्ट यूजिंग दिस बुक. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन बैंक कंटेनिंग more than 1000 questions on finance, management, ESI. ये फेज 2 के लिए है. अगर फेज 2 में थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो डेली बेसिस पे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस बुक और एनी अदर टेस्ट सीरीज एज वेल. ठीक है ना. टेस्ट्स बिफोर द एग्जामिनेशन आर द बेस्ट वे ऑफ कवरिंग द सिलेबस, रिवाइजिंग द सिलेबस, रिकॉलिंग द राइट थिंग्स बिफोर द एग्जामिनेशन. चलिए वापस आते हैं. लेट्स कम बैक टू सेबी एनुअल रिपोर्ट. मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या हम कवर करेंगे एंड देन वील गेट इनटू इट. सबसे पहले आई हैव डिवाइडेड द हाइलाइट्स गिवन बाय सेबी चेयरमैन इन द इंट्रोडक्शन इनटू 9 डिफरेंट पार्ट्स. अब ये जो हाइलाइट्स हैं इसमें यू विल फाइंड आउट एंड यू विल फिगर आउट कि मेजॉरिटी चीज़ें जो नीचे भी सेबी बात करना चाहता है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कवर्ड हेयर. जो भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो हाईलाइट से हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट हाईलाइट्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स आर हाईलाइट्स. तो वहाँ पे डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों की नहीं मिलती है. इसलिए फिर चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, पूरा एनुअल रिपोर्ट डिवाइडेड है. टोटल ऑफ 13 चैप्टर्स आर देयर इन द एनुअल रिपोर्ट बट मैं 13 चैप्टर्स में कवर नहीं कर रहा हूँ. आई हैव टेकन आउट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है. आई थिंक आई हैव डिवाइडेड माई the entire content into 7 chapters. Chapter 1 and 2 is about performance of Indian financial market. सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे. फिर उसके बाद प्राइमरी मार्केट अलग से है, सेकेंडरी मार्केट अलग से है. फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सब अलग से है जो एक फंड मैनेजमेंट का अलग से चैप्टर है. Foreign portfolio investors a different chapter and investor education and protection ये एक different chapter है which is one of the major objectives of SEBI. इसलिए उसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी SEBI ने बनाया हुआ है. So this is the entire division of how the annual report will be covered. I hope the structure is clear. Just give me a thumbs up. Let me know if the structure is clear. I'll move forward and we'll start covering it. I'm not very happy with ओके. सीम्स टू बी अ लिटिल बेटर नाउ. चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके. हाइलाइट्स T+1 and T+0 settlement cycle. I hope
you know what is a settlement cycle. Let's say मैंने मंडे को एक स्टॉक खरीदा, तो T+1 अगर होता है तो ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में वो स्टॉक रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा. That share will start reflecting in my account on Tuesday if I'm running on T+1. If I'm running on T+0, then on Monday itself, that share will start reflecting in my account, which means settlement is going to happen on the same day or on the next day. Right now, we have moved from T+2 to T+1, which means if I buy a share on Monday, it starts reflecting in my account on Tuesday. So settlement happens on Tuesday. That is T+1. SEBI says we want to move towards T+0, and it will be the first country in the world if it moves towards T+0 completely. Right now, a beta version of T+0 is going on. मतलब उसकी testing चल रही है. Okay. It says the Indian securities market was one of the first ones in the world, not the first, one of the first, to adopt T+1 settlement cycle. अब हम T+0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. Advantages क्या हैं? ये नीचे भी डिस्कस करेंगे, बट यहां भी दिखा देता हूं. शॉर्टर द सेटलमेंट साइकिल, द सूनर द फंड्स एंड सिक्योरिटीज आर रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर्स. ये सबसे पहला एडवांटेज है. अगर T+0 होगा, आई परचेज द शेयर ऑन मंडे, आई रिसीव्ड द शेयर ऑन मंडे इटसेल्फ, so it had advantages for me because I'm receiving what I've paid for immediately. It's like going to a shop, buying let's say biscuits, and then the shopkeeper telling you आज नहीं कल लेके जाना बिस्किट, या कल डिलीवर कराऊंगा. You will feel यार अभी पैसे दिए, I want it immediately. The same is happening here. Along with greater efficiency, it also reduces the risk in settlement. रिस्क जो होता है, काउंटर पार्टी रिस्क जिसको हम बोलते हैं. लेट्स से मैंने मंडे को शेयर खरीदा SBI का, and I'm due to receive it on Tuesday on T+1 settlement system. But on Tuesday, I'm not able to receive it. Why? Because the counterparty was not able to give it to me. The counterparty, which means the other party, defaulted in the settlement. तो मतलब risk हो गया यहाँ पर. The other party said, I am not able to pay it to you because let's say the share became expensive. So the counterparty said, I don't have the share anymore, you take your money back. मैंने let's say 600 रुपए में खरीदा था, and the next day instead of receiving the share, I received 600 rupees back. मेरा तो लॉस हो गया ना. लॉस क्यों हो गया? Because market में the share is more expensive now. Let's say the share has appreciated to 650 rupees. Share expensive हो गया, so normally I have lost here. So that counterparty risks reduces. It is not eliminated, but it reduces when we have a shorter cycle. The strong foundation on which T+1 settlement cycle was developed has now been extended to provide an optional T+0. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है. आई होप ये समझ आ गया. एक हमने मेजर एडवांटेजेस देखे हैं. सेटलमेंट जल्दी होता है, रिस्क हमारा जो है काउंटर पार्टी रिड्यूस हो जाता है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. सेफ्टी नेट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम सीरियस टेक्निकल ग्लिचेस. ब्रोकर्स प्रेजेंटली ये फेस करते हैं. द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म will allow investors to square off their open positions and cancel pending orders in case of serious disruption of trading services provided by the brokers. होता क्या है? ब्रोकर ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसके थ्रू दैट प्लेटफॉर्म I as an investor, I as a trader can trade. Now if there is a disruption in trading service, I should have the option of closing my open positions, cancelling my opening orders. जो भी अभी ऑर्डर मैंने खोले हुए हैं कि मैं इनको खरीद के सेम डे पे बेचूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग में if you're buying something, you have to sell it on the same day. You have to settle the entire transaction on the same day itself. तो अगर मैंने कोई ओपन ट्रांजेक्शन करी, कोई ऑर्डर दिया, बट ग्लिच की वजह से नाउ आई नो दैट आई माइट नॉट बी एबल टू सेल दिस ऑर्डर, तो मेरा लॉस हो जाएगा. इन ऑर्डर टू नॉट गेट इनटू दैट, आई शुड हैव एन ऑप्शन टू कैंसिल एन ओपन ऑर्डर, कैंसिल एन ऑनगोइंग ऑर्डर, और या फिर कोई ओपन पोजीशन है तो उसको सेटल करने का ऑप्शन होना चाहिए. This is provided by SEBI through a safety net which is called as Investor Risk Reduction Access Platform. ये SEBI provide करने की कोशिश करेगा, will allow. Second point. Third point, ये सारे highlights हैं. ASBA like facility for exchanges. Application supported by blocked amount. अब ये ASBA होता क्या है? ASBA बोलता है, let's say I have purchased again a share of SBI
and I have to pay the broker 600 rupees for that purchase, and the broker says I will give you the share tomorrow in the evening at 5 p.m. By then only I'll be able to give you that money. Instead of making the payment today itself of 600 rupees, I should have the option of blocking this money by keeping it money in my own account. मेरे ही account में रहेगा, but ये block हो गया, but I keep receiving interest on this money. अब ये 600 की जगह 6 लाख है, तो एक दिन का इंटरेस्ट काफी हो जाता है. 6 लाख की जगह 60 लाख है. If it is 60 lakh, the interest is even higher. So my loss of interest in this case is reduced or eliminated altogether, because now that money is in my own account. Now that money is also receiving interest. It's just that it is a blocked amount which now cannot be used by me. And tomorrow, when the broker gives me, pays me, transfers that share to me, automatically this money will transfer to the broker. So this is called as ASBA, application supported by blocked account. ये facility has been operationalized by the exchanges. Brokers can elect to offer their client the option to trade in secondary market while keeping funds blocked in their bank account. This facility was available only in the primary market. Now, SEBI is extending this facility to the secondary market also. That is the change. That is the change that SEBI has. I hope this is clear. Next highlight is on IPO, initial public offer. The listing timeline of all public issues has been reduced to 3 days from the previous 6 days. मतलब जब भी पब्लिक इशू होता था, आफ्टर इट इज फाइनलाइज्ड, पीपल हैव अप्लाइड फॉर इट, जैसे भी ओला का आया था, आपने अप्लाई कर दिया, सब कुछ फाइनल हो गया, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद लिस्टिंग यूज्ड टू टेक अबाउट 6 days. नाउ सेबी हैज रिड्यूस्ड दैट टाइमलाइन टू 3 days, जिससे कि उससे फायदा क्या होगा, इन्वेस्टर को, इशूअर को पैसा जल्दी मिलेगा. ओला विल गेट द मनी फास्टर बिकॉज ओनली व्हेन इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विल ओला एक्चुअली रिसीव द मनी. So Ola will receive the money, the issuer will receive the money faster, the investor will also receive their shares faster, और ऑटोमेटिकली पूरी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, फ्रॉड्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज यू रिड्यूसिंग दैट टाइमलाइन, इन विच टाइमलाइन उस टाइम पीरियड में स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, फ्रॉड ज़्यादा हो सकते हैं, आपने उसको कम कर दिया. समझ आ गया. 1.5 डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट. ब्रीफ बता देता हूँ, नीचे डिटेल में कवर्ड है. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करने की कोशिश की है सेबी ने. क्या क्या किया है ब्रीफली. मिनिमम एप्लीकेशन साइज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू करने का कम कर दिया है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड. स्कोप ऑफ ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म सो दैट पीपल कैन बाय एंड सेल, दिस विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम. तो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बढ़ाने की कोशिश. इंट्रोडक्शन ऑफ अ बैकस्टॉप फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ CDMDF, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड. विल डिस्कस दिस इन डिटेल लेटर, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा बैकस्टॉप होता क्या है. द आइडिया इज टू क्रिएट अ फंड. ब्रीफली अगर मैं बताऊं, द फंड दैट कैन एक्ट एज अ गारंटी और लाइक अ बफर. सो दिस फंड विल बी यूज्ड टू बाय बॉन्ड्स when the prices of bonds are going down, which means demand is very low, and if the demand is very high and the prices are hitting the roof, then this fund will help in stabilizing the prices of the bonds. So basically the idea is to allow the bond market to function smoothly without facing crashes, without facing too many fluctuations. That is called as backstop facility. अभी इसको डिटेल में बाद में समझेंगे. लॉन्च ऑफ AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, इसको भी नीचे देख लेंगे व्हेन वी गो थ्रू डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट. ठीक है ना. कैपिटल फॉर्मेशन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, operationalization of the social stock exchange. Some changes have been made in order to make the social stock exchange more popular, more liquid, more useful by the people, because social stock exchange पे जो overall the amount of trading, the amount of investment that has happened is very less. तो उसमें वो जो updates हुए हैं that will also be covered below only. Grievance redressal में there are two major changes or two major initiatives. Number one, Scores 2 एक प्लेटफॉर्म बनाया है सेबी ने, wherein the investors like you and me can submit their grievances
for whatever grievance they might have concerning regulated entities, concerning intermediaries, concerning issuers, whatever it is that they are facing, they can go to this platform, they can file their grievance complaint. Just like RBI has RBI Integrated Ombudsman Scheme IOS, ऐसे ही सेबी ने बनाया स्कोर्स 2.0. Redressal of investor complaints, that is the objective. More efficient with reduced timelines. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, टाइमलाइन क्या है कोर्स 2 की ग्रीवेंस रिड्रेसल की. इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 days to 21 days. मतलब 21 दिन में दे हैव टू रिजॉल्व. इफ दे डोंट रिजॉल्व देन ऑटोमेटिकली द केस गेट्स एस्केलेटेड टू अ हायर अथॉरिटी, जिससे और ज़्यादा जल्दी वो रिजॉल्व होगा उसके बाद. ओके, तो 21 days इज द मैक्सिमम टाइमलाइन दैट हैज बीन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. अब क्या क्या फीचर्स हैं मेजर कोर्स 2.0 के? Complaint once lodged against the intermediary will directly be forwarded to respective intermediary instantaneously. मैंने I have filed a complaint, let's say against Zerodha to in course 2.0. Automatically that complaint will be forwarded to Zerodha as a intermediary. उसको अपने आप पता लग जाएगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज अ कंप्लेनेंट. Auto escalation of complaint in case the complaint are not resolved by the intermediary within 21 days. 21 दिन में नहीं रिजॉल्व किया तो एस्केलेट हो जाएगी अपने आप ही. Providing 2 levels of review. If I'm not happy with the resolution, then I can file for an appeal also by the designated body. First one is by the designated body if the investor is dissatisfied. Second review is by SEBI if the investor is still dissatisfied. So review power is given to the investor. An investor can first go to a designated body, कोई भी हो सकती है, which is can be created by SEBI, and the second one is given to the SEBI. तो SEBI second review में काम करेगा. ये था first dispute redressal grievance redressal system. तो first वाले में grievance की बात हो रही है, second वाले में dispute resolution की बात हो रही है. That is the only difference between the first and second. Second को हम बोलते हैं smart ODR, which is again an online dispute resolution system. जो भी कंपनीज हैं, कंपनीज के बीच में, लिस्टेड कंपनीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कंपनीज और इंटरमीडियरीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट amongst any entity or individual involved in the financial market, that dispute can be filed and looked after by smart ODR system. ठीक है ना? ये मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की तरह काम करेगा, वेरी सिमिलर टू आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम. तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम तो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी देख रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी देख रहा है. यहाँ पे देव क्रिएटेड 2 different platforms for 2 different things. RBI had allowed arbitration in physical mode against listed companies and registered and or their registrar to issue and share transfer agents. मतलब पहले ये बोल रहा है कि सेबी हैड गिवन अ फिजिकल मोड ऑफ arbitration and mediation, but now they've transformed or transitioned the entire activity towards an online dispute resolution system. That is all that it is talking about, और इसमें कुछ नहीं है. ठीक है. The next major initiative by SEBI is on REITs. We will discuss this later again. नीचे आएगा ये फिर से. To widen the ownership of real estate, SEBI has introduced small and medium REITs with assets starting from 50 crores. इसके बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो सेबी ने क्या किया है, एक स्मॉल एंड मीडियम SM REITs करके एक नया क्लासिफिकेशन क्रिएट किया है. REITs का आई होप यू नो व्हाट आर REITs एंड InvITs. दीज आर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बाय हैविंग पार्शियल ओनरशिप ऑफ either real estate or infrastructure investments. मेरे पास एक पूरा घर लेने की औकात नहीं है, लेट्स से 2 करोड़ का घर आता है, मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं. What will I do? I can invest by partnering with someone in through a REIT. तो उसमें मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किए, जो भी रिटर्न आएगा उसका मुझे उतना ही शेयर मिल जाएगा. ओके. Now SEBI says that we are creating a new classification called as small and medium REITs as companies, not as individuals, with assets worth or starting from 50 crore. 50 करोड़ के एसेट से आप स्टार्ट कर सकते हो एक रीट अगर आपको क्रिएट करना है एज अ कंपनी. तो ओके,
विल बी कॉल्ड एज स्मॉल एंड मीडियम रीट। लास्ट जो इनिशिएटिव लिया है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लिया है सेबी ने। व्हाट आर दीज इनिशिएटिव्स? नंबर 1, promoter group entities and non-individual shareholders, and promoter entities which are holding more than 5% of equity share capital in a company can contribute towards the promoters without being identified as a promoter। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंपनीज एक्ट से निकाला हुआ है सीधा, ऐसा दिखने में लगता है, मैं समझा देता हूँ। What it means is companies or non-individual, which means institutional investors or shareholders who have more than 5% shareholding in a company can contribute their shareholding towards the promoter। जो प्रोमोटर है उसको अपने शेयर्स दे सकते हैं या फिर उसको उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। दे कैन डू दैट without being identified as a promoter। So these two entities without being identified as a promoter can help the promoter given that they have more than 5% stake in a company। That is number 1। General Information Document GID, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, and Key Information Document KID। These are two documents that have been created for bonds। If I as a company wants to issue bonds or commercial paper, then I can use general information document और key information document, जिससे कि मेरी जो इशू करने की एक्टिविटी है वो सिंप्लीफाई हो जाए। The idea is to simplify the activity of issuing bonds or commercial papers in the market because these documents are comparatively smaller। उतना डेप्थ में मेरे को डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट इज voluntary delisting of non-convertible debt securities, non-convertible debentures or non-convertible redeemable preference shares, which means if I as an issuer has issued non-convertible debentures or non-convertible redeemable preference shares, I can voluntarily delist my debentures or redeemable preference shares with lesser permissions। So voluntarily I as an issuer can delist my non-convertible debentures or preference shares if I want to, with minimal or with very less पेपर वर्क रिक्वायर्ड एनी मोर। सेबी ने वो पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सारा हाइलाइट्स हो गया। अभी हमने खाली हाइलाइट्स पढ़े हैं, अभी आगे चल के देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे सारे फैक्ट्स हैं इस वाले चैप्टर में। एक एक करके सारे फैक्ट्स देख लेते हैं, मार्क करते चल सकते हो। ये डॉक्यूमेंट भी मैंने कोर्स में डाल दिया, वहां पे भी देख सकते हो। The capital markets in 2023-24 facilitated resource mobilization of about 11.8 lakh crore। ये हम खाली कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। अब ये कैपिटल मार्केट में मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, which means not trading but new issues which are being floated in the financial market। अब न्यू इश्यूज कहां से आते हैं? जरूरी नहीं है खाली आईपीओ के फॉर्म में आए। It can be a private IPO, it can be a public IPO, it can be a private offer as well, it can be an offer in the form of debt, it can be debt but private, मतलब मैंने privately कुछ individuals को invite किया कि मेरी कंपनी में invest करो, that is also included in this। It can be investment in the form of REITs and InvITs, it can be alternative investment fund investment also। ये सब मिला के a total of new capital of about 12 lakh crore, precisely 11.8 lakh crore। This is the amount of money that has been mobilized through the capital market। I hope this makes sense now। Corporate bond market में क्या हुआ है? Corporate bond market has mobilized again। Corporate bond market mobilization की बात हो रही है, मतलब नया पैसा जो आ रहा है, not trading। Total of 8.6 lakh crore, which is a lot, marking the highest amount of funds raised in a fiscal year so far। तो corporate bond market में भी काफी पैसा रेज किया है, मोबिलाइज किया है। Alternative investment fund, the commitments raised by alternative investment funds have seen threefold increase, reaching 11.3 lakh crore at the end of 2023-24। total alternative investment fund market में जो नया पैसा क्रिएट हुआ है, कमिटमेंट्स क्रिएट हुए हैं, that is 11.3 lakh crore, which is also very high। okay,
म्यूचुअल फंड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है? वेरी वेरी हाई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसेट अंडर मैनेजमेंट हैज इंक्रीज टू 53.4 लाख करोड़। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में द अमाउंट ऑफ एसेट विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज approximately 54 lakh crore. The number of investors have increased to 4.5 crore in this financial year. अब देखो 140 करोड़ लोगों की जनता है और उसमें से 4.5 crore people are presently active in the mutual fund market, which means that there is so much potential to grow in this market in the future, right? The assets managed by portfolio managers has also risen. पोर्टफोलियो मैनेजर्स कौन होते हैं? जो 50 लाख से ज़्यादा का पैसा आपका मैनेज करते हैं. इफ यू वांट टू गेट योर मनी मैनेज्ड बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर, उसको हम बोलते हैं पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 50 लाख. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट थ्रू एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 1 करोड़, 1 CR. ओके, तो ये दोनों कंडीशंस हैं एआईएफ में और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दी फाइनेंशियल मार्केट. तो पोर्टफोलियो managers are managing about 33 lakh crore, the amount of money that they are managing this in the last financial years. अब यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड about 53 lakh crore and the remaining 33 lakh crore पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंदर है. टोटल दोनों मिला के 80 लाख करोड़ के आसपास बनता है. ओके, now in the mutual fund market they have introduced mutual fund light regulation for passive funds. passive funds के लिए उन्होंने एक नया निकाला है which is called as mutual fund light regulation. The idea is, if I want to set up a mutual fund company which will only release and create passive mutual funds, मैं एक ऐसी कंपनी सेटअप करना चाहता हूं जो खाली पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करेगी या पैसिव म्यूचुअल फंड्स मैनेज करेगी. आई कैन डू दैट एज वेल, एंड द रेगुलेशन फॉर दैट बाय सेबी हैज बीन रिड्यूस्ड और लाइटनड. व्हाई? बिकॉज मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रही है. आई एम जस्ट क्रिएटिंग such kind of mutual fund instruments which are cloning the indices in the market. Let's say I create a mutual fund instrument which clones Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. ये दोनों को combine करके clone कर देता है. So 50% of my money is invested in indices of BSE and 50% in indices of NSE. That's it. That is what I'm doing. तो मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, रिस्क भी बहुत कम है मेरा एज म्यूचुअल फंड कंपनी, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रिस्की, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद एनी डिस्क्रिशन. तो इसीलिए रेगुलेशन भी मिनिमाइज कर सकते हैं. तो नया रेगुलेशन उन्होंने निकाला है फॉर म्यूचुअल फंड पैसिव फंड्स कंपनीज. सेकेंडरी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द सेकेंडरी मार्केट हैज ग्रोन बाय 50% सिंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर. 387 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन US डॉलर्स. ये प्लीज नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने के चांसेस हाई हैं. टोटल सेकेंडरी मार्केट में कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है? 387 लाख करोड़. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्फ्यूज किया 2.1 लाख करोड़ इनटू द इंडियन इक्विटी मार्केट, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने डेट सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है 1.2 लाख करोड़, हाफ ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली. टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है 3.4 लाख करोड़. डिवीजन मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है. ओके, मार्केट सर्वेलेंस with the intent to prevent abnormal price rise in companies with market capitalization of less than 500 crore, surveillance mechanisms for micro small companies has been introduced. मतलब जो कि बहुत छोटी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन 500 crore, ऐसा नहीं होना चाहिए that the price is 100 rupees today and 2 rupees tomorrow. That kind of volatility is bad for the system, is bad for the capital market, is bad for the financial system. तो इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, मार्केट सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स क्रिएट किए हैं. व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एज रिव्यूअल ऑफ नंबर 1 अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. पहले क्या होता था, आज तक क्या होता था,
SEBI used to say to all the entities that you decide what is unpublished price sensitive information according to you as a company. And therefore, a lot of companies were not, sharing sensitive information by classifying it as non-sensitive information. मैंने खुद ही बोल दिया कि ये मेरे हिसाब से sensitive information नहीं है, so I don't want to publish it. Therefore, RBI said we will come out with certain standard unpublished price sensitive information that every small company will have to issue, especially those companies with market capitalization of less than 500 crore. उसके उस information के through we can try and reduce the speculation and variation, abnormal price movements in these kind of companies. Okay, I hope that is clear. Review the definition of corrected person. एक और definition change करने की बात हुई है, connected persons की definition. So now people who are connected to connected people will also be called as connected people. That's the idea. Let's say I am director in the company. My wife would be a connected person. My wife's son, which is my son, let's say, would be a connected person. Or let's say my wife's sister, जो मेरी would be my sister-in-law, would also be a connected person. Her sister's husband would also be a connected person. So this is how the SEBI is saying that the definition of connected person will now include a larger number of people who are connected with the company somehow. एक बार पढ़ के देख लेते हैं. A connected person is defined as a person who has a connection with the company that is expected to put him in possession or give him any kind of unpublished price sensitive information. It includes people who may not seemingly occupy any position in a company but are in regular touch with the company and its officers. Okay, तो इसकी definition को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया. We broadened the definition. Okay, I hope this is clear. नेक्स्ट पे आते हैं. ग्लोबल ग्रोथ में सेबी ने क्या देखा है? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू IMF, द ग्लोबल ग्रोथ इज 3.2% इन 2023. प्लीज ये नंबर्स याद रखिएगा और सारी ऑर्गेनाइजेशंस के याद रखिएगा. दिस इज गिवन इन सेबी एनुअल रिपोर्ट एज पर IMF. ये पूरा याद रखना जरूरी है. ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 6.3%, 6.8%, 5.9% in 2024 and further to 4.5% in 2025. OECD का एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर फॉर G7 and G20 कंट्रीज, मेजरली डेवलप्ड नेशंस, हैज बीन बिलो 100 सिंस 2022. और ये कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर होता क्या है? यहाँ पे यू कैन सी दैट इट हैज बीन बिलो 100. यहीं पे बस 100 से ऊपर गया था. यहाँ पे देखो पूरे में इट हैज़ बीन बिलो 100 सिंस 2022 है. ये कॉम्पोजिट लीडिंग इंडिकेटर है क्या? इट्स अ सिग्नल ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन बिजनेस साइकिल्स शोइंग फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इफ इट इज बिलो 100, दैट मीन्स द कॉम्पोजिट लीडिंग इंडिकेटर इज शोइंग that business activity is going down, that the business activity is not positive, that the business activity is not improving in this time period. तो लॉन्ग टर्म पीरियड में जो मूवमेंट है उसको मेजर करने की कोशिश करता है कॉम्पोजिट लीडिंग इंडिकेटर. ओके, so since 2022 OECD's composite leading indicator has been below 100 according to this report. इंडिया की ग्रोथ में IMF ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू सेबी एनुअल रिपोर्ट, 6.8% 2023, projected 7.6% in 2024. Private final consumption expenditure 3% growth in 2024 financial year. Gross fixed capital formation 10.2% in 2024 financial year. अभी numbers याद रखने, and I hope you know what is gross fixed capital formation, private final consumption expenditure पता होना चाहिए. Exports are projected to grow by 1.5%. From a supplies perspective, GVA is expected to grow by 6.9% compared to 6.7% in 2023. Export 1.5, GVA 6.9. अब यही सारे नंबर्स यहाँ पर अच्छे से चार्ट में मेंशन्ड है. वर्ल्ड आउटपुट 3.2%, एडवांस्ड इकोनॉमीज वेरी लेस 1.7%, इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इंडिया में 33%, विच इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट. एडवांस्ड इकोनॉमीज का देख सकते हो कम है काफ़ी कंपैरेटिवली. ओके,
सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया का अगेन वेरी नाइस 32%, एडवांस्ड इकोनॉमीज कंपेरेटिवली लेसर 22%, बिकॉज ये सेविंग्स, वन सेकेंड, इंडिया का यहाँ पर नहीं है, इंडिया का इज नॉट 32%, यहाँ पे मेंशन नहीं है इंडिया का। आई थिंक फिस्कल डेफिसिट इंडिया का काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, इफ आई एम राइट, यस। एंड यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट इज नहीं, फिस्कल डेफिसिट इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज, बिकॉज ये नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है यहाँ पर। ओके, so this is what you can see here 2024, and similarly current account deficit is also in the negative of India compared to advanced economies and emerging market developing economies. Now why is this not a worry for India when the fiscal deficit and current account deficit is in negative territory? Is because we are developing, and if we want to develop faster we have to take loans. कोई कंपनी भी क्रिएट करोगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करोगे, you have to try and invest money either in the form of loans or you have to get some partners, etc etc. तो यही ये करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, equity growth between April and December, Nifty 50 posted 25% return. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये फैक्ट है जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नीचे डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. ड्यूरिंग 23-24 नेट एफपीआई इनफ्लोज 3.39 लाख करोड़ नेट एफपीआई इनफ्लोज. वॉलंटरी रिटेंशन रूट चैनल होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का टू इन्वेस्ट इन इंडियाज डेट मार्केट. एक बार ये देख लीजिएगा, ये सब मिला के नेट एफपीआई इनफ्लोज जो है इंडिया में हैज़ बीन 3.39 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3.4 लाख करोड़ नेट एफपीआई इनफ्लोज. ओके, चलिए. So I think we will not be able to complete the entire session because 6 o'clock we have another session of Parul ma'am as well. Spotlight का session है, तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं. What we'll do is we'll pick it up again in the next session. Chapter 3, Chapter 4, primary market, secondary market, fund management activities, FPI and investor education. ये 4-5 चीज़ें छोटी छोटी जो हैं, क्योंकि हम कुछ किक स्टार्ट मिल गया तो it will be faster now. So we'll try and finish it off in the next session that we have. Okay, Saturday, Sunday, Monday, these 3 days I'm going to have marathon sessions. Please make sure that you attend those marathon sessions. They will be held at 7 PM और उनमें मैं RBI 247 कवर करूँगा. RBI 247 का जितना हम रिविजन करना की कोशिश करेंगे, मैक्सिमाइज करने की. We'll try and finish off the last 6 months of RBI current affairs. It will also include notifications, press releases, a lot of them of RBI, but I have today only given separate documents of RBI notifications and press releases as well. Please उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए. बहुत सारी चीज़ें उनमें से RBI 247 में ही हम कवर कर पाएंगे, but from 1st September onwards I will be covering RBI website which includes RBI notification and press releases as well. Okay, आज हमने सेबी की एनुअल रिपोर्ट कवर करी है फॉर सेबी स्टूडेंट्स एंड आरबीआई स्टूडेंट्स. We'll try and finish it off in the next session. Okay. The SEBI report is given in your paper 2 live folder. वहीं पे SEBI की रिपोर्ट डाली हुई है करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में. प्लीज चेक इट देयर. वहाँ पर मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा. ठीक है, चलिए. ऑल द बेस्ट गाइज. आई विल सी यू वेरी सून अगेन. टेक केयर. बाय बाय.